है कृष्ण करुण बंधो दिन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते गीता सुगीता कर्तव्य किम यने शास्त्र विस्तरे ते स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मद्विनिसृता पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्य महाभारते अद्वैतामृतवर्षिणीं भागवतीम् अष्टाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। भारतामत्र सर्वस्व विष्णोवत्रास्त्रम गीता गंगोत्कः पुनर्जन्म च विद्यते सर्वपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनम पार्थावत्यस्य सुधीर भक्ता गीता घृतम महंत। In the hearts of turmoil, wisdom stands tall. Gita's teaching resonate, guiding us all. With every challenge is faced, it whispers the way. Embrace your true self, let not fear sway. In hearts of strife, wisdom shines bright, guiding lost souls through the shadow of night. With duty as compass and truth as our guide, the Gita whispers softly in every heart's tide. जहाँ है सत्य वही है कृष्ण, प्रेम का सागर ज्ञान का वृक्ष, कर्मयोगी भक्तों के प्यारे, सबके हृदय में बसते हैं कृष्ण हमारे। कभी वो सखा कभी सारथी बने, धर्म की राह दिखाने को खड़े, गीता सार से जिसने जीवन सिखाया, उस कृष्ण को हमने हृदय में बसाया। बंसी की धुन में बसा है संसार, कृष्ण के स्वरों में अद्भुत है प्यार, माखन चुरा के जिसने रच दी कहानी, उसकी मूरत में छिपी है सादगी निराली। Ladies and gentlemen, a warm welcome to this jubilant evening. Today we gather not only to celebrate talent and creativity, but to reflect on the profound wisdom of an ancient text that continues to inspire humanity, the Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, a timeless dialogue between Lord Krishna and the warrior Arjun, is not just a scripture, but a guide for life, a source of deep insight to face challenges, find inner peace, and understand our purpose. The Bhagavad Gita represents profoundly relevant in today's world, offering timeless wisdom that addresses individuals. दुनिया की हर समस्या का हल जीवन के कर्मों का फल है गीता। सब ग्रंथों का सार एवं वेद पुराणों का विस्तार है गीता। कृष्ण के साक्षात स्वरूप और वेदों का सार है गीता। मोह माया एवं मोक्ष का आधार है गीता। From Krishna's own lips, eternal truth flows. In silence and stillness, let your inner light glow. जो गीता का सार हमें समझाए, धर्म की राह पर चलना सिखाए, वह कृष्ण है। अपार बुद्धि ऊंचे सिद्धांतों को जीने वाला, वह कृष्ण है। जो दिलों को लुभाए हर पल भक्तों का भार उठाए, वह कृष्ण है। जो महाभारत में बने सारथी महान, धर्म का दिया जिन्होंने अमर प्रमाण, वह कृष्ण है। To dance, opera and drama, let us unfold the story of Arjun's dilemma and Krishna's profound wisdom that transcends and space. So sit back and relax. Let us take you on a journey into the heart of Bhagavad Gita and its timeless truth. So let's take a step ahead. Sanskrit is a language that transcends time, carries within it the eternal wisdom of our ancestors. Its verses are not just words, but vibrations that align us with the rhythm of the universe. These verses are a reflection of our culture, each one rich with meaning and purpose, meant to uplift the soul and bring peace to our body and mind. Let's begin with a powerful invocation of peace. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukh bhag bhavet. This shloka reminds us that the essence of life lies in the well-being of all. It calls for universal happiness and compassion, a timeless message for humanity. Now, a verse from the Bhagavad Gita that resonates with inner strength and resilience. Karmanyavadhikaraste ma phaleshu kadachana ma karma phalahetur bhuma te sangotsva karmani. This shloka teaches us to act with dedication and sincerity without worrying about the results, a lesson that helps us stay grounded in our journey. As we listen to these sacred words, let their meanings seep into our hearts, reminding us of the higher purpose behind what we all do.
प्रकाश की राह पर बढ़ते चले, सपनों को सच करने का संकल्प लें। ज्ञान की किरणें हर दिशा में फैलाओ, अज्ञान का अंधकार मिटाओ, शांति और स्मृति का पथ अपनाओ। With these timeless shlokas, may we find balance, strength and a clarity to move forward with wisdom and grace. कार्यक्रमस्य वेलायाम् इदानीम् अहं श्रीमद्भगवद्गीताया श्लोकोच्चारणार्थं विद्यालयस्य छात्रान् आह्वयामि यत् ते आगत्य मङ्गलाचरणं कुर्युः। Now, we would like to invite the students to present 18 verses from the 18 chapters of the Bhagavad Gita. Sarve Chhatranam Krite Kartalvanai Swagatam Kuryat.